Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार। कार्यक्रम में आज तमाम विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Domestic stocks log gains of more than 0.5% amid positive global cues. Sensex rises above 53,750 points. Nifty settles above the 16,000 mark, and Brent crude oil prices hover below $100 per barrel mark. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज। सेंसेक्स 53,600 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 16,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर से नीचे। In our top story from the stock market performance, Sensex and Nifty today gained more than 0.5%. Both stock indices added amid positive global share markets trading in a narrow range. Sensex closed above 53,750 points, while Nifty finished near 16,050 level. Sensex rose by 345 points at 0.65% to finish at 53,761. Nifty also added 111 points at 0.69% to end at 16,049. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index gained by 0.84%, while the small-cap index ended 0.52% up. In the Sensex pack, 18 companies posted gains while 12 logged losses. Sun Pharmaceuticals was the top gainer as it climbed 2.3%. Dr. Reddy's Laboratories added 1.7%. Kotak Mahindra Bank rose by 1.5% and Maruti Suzuki ended 1.4% up. On the other hand, Axis Bank tumbled 1.7%. HCL Technologies and State Bank of India both declined 1.5% each. Tech Mahindra plunged 1.4%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 15 sectors gained while 4 witnessed losses. The auto sector index climbed by 2.3% and the consumer durable sector gained 1.6%. Fast-moving consumer goods, FMCG and capital goods both rose by 1.5%. On the other side, the metal sector lost 1%, while the FMCG and capital goods both declined. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,299 companies gained while 2,023 companies fell. Shares of 140 companies remain unchanged. जी, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.5% से अधिक की तेजी रही। वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के बीच दोनों सूचकांकों में बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 53,750 से ऊपर, जबकि निफ्टी 16,050 के स्तर के करीब बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.65% बढ़कर 345 अंक की वृद्धि से 53,761 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.69% की वृद्धि से 111 अंक चढ़कर 16,049 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.84%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.52% की बढ़त दर्ज हुई। हमारे आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य स्टूडियो में आ चुके हैं। भट्टाचार्य जी, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आज हम बात शेयर बाजार की करें तो 4 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी दर्ज हुई है। क्या आप ट्रिगर्स देखते हैं आज तेजी के पीछे? देखिए, जो अर्निंग सीजन जो आ रही है, अर्निंग सीजन में लगता है कि जो मार्केट का जो एस्टिमेशन जो है कि कंपनियां शायद उनकी अच्छी नफा कमाएंगी और उसी का नतीजा थोड़ा बहुत दिख रहा है। दूसरी तरफ जो तेल के दाम जो हैं वो थोड़े बहुत गिर गए हैं और ये एक तरफ से तो हमारी फॉरेन ट्रेड के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बहुत धक्का पहुंच सकता है।
पर उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि तेल के दाम के गिरने से जो डोमेस्टिक कंपनी की जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन में जो इजाफा होगा उसी को अर्निंग्स ग्रोथ में कन्वर्ट करके जो मार्केट में ओवरऑल जो एक सेंटिमेंट जो है मैं समझता हूं कि आज की तारीख में आज में मार्केट में थोड़ी बहुत उछाल इसीलिए दिख रही है. Well, Vishal, we were discussing earlier about the volatility in the market. In fact, it came down by 4% and the VIX India was at 17.59. And if you look at how the Sensex moved today, we were discussing this in Money Matters also, Vishal, where the market actually fell at just after 12 o'clock to 53,415. And then there was short covering in the market, value buying one can say, and then the market moved up to 53,760, which is why the market closed at 345 points up, and that's quite a credible jump showing the resilience of the stock market despite the two earlier sessions witnessing losses. Today the market closed in the green. So AKB, what's going on behind this buying interest? We know there has been a sell-off in the IT space. Profitability and the revenue guidance is not as per expectations. Also concerns that there might be a recession in Europe and the United States, which is where the customer base is. But despite the resilience, we are still seeing that the market has some space to fall. The F&O market is saying that the market may fall by another 200 points in the Nifty. Resilience versus this fall, how would you advise investors at this point? Well, as always, the investors must remain cautious, must not just look at the overall indices that we normally focus on. They should rather focus on individual sectors and individual stocks. Because we have reached a point in India's stock market trajectory where the overall indices will tell you far less, in my view, than what the individual sectors and individual stocks will tell. For example, there are sectors and there are stocks which are in the hospitality sector, the tourism sector, which are bouncing back. The travel sector, and even the pharmaceutical sector, the banking sector with the kind of corporate credit growth which is at 13%. So you are seeing a kind of a variegated and segmented stock market response to what is happening to the Indian economy. Remember that the high frequency indicators continue to send out fairly positive signals on the way the economy is responding to the emergence out of the COVID and tackling the Russia-Ukraine conflict, plus the fears of recession impacting a good part of the global economy. जी, आज हम देखें तो ऑटो सेक्टर इंडेक्स जो है वो 2.3% चढ़ा है और अभी जो फिलहाल की ताज़ा जो जून महीने के जो आंकड़े आए हैं सियाम के, वो ये बताते हैं कि यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 19% की वृद्धि जून में दर्ज की गई और टू व्हीलर के जो यात्री वाहन हैं उनकी भी थोक बिक्री में इजाफा हुआ है. किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो ऑटो सेक्टर जो है वो जो सिचुएशन में, जो स्थिति में वो 6 महीने पहले में थी और अब जो है उसमें एक, जैसे हम कहते हैं, आकाश पाताल का अंतर आ गया है. 6 महीने पहले आउटलुक ऑटो सेक्टर का स्पेशली जो मिडिल सेगमेंट या हाई एंड सेगमेंट कार के लिए और जो लो एंड जो गाड़ियां थी उनकी डिमांड में काफी नमी थी और ये चिप शॉर्टेज के कारण अचानक हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो चिप शॉर्टेज की जो डर जो था वो आस्ते आस्ते निकल जा रहा है और ऑटो सेल्स, आपने सियाम के फिगर की जिक्र की, पर अगर आप रजिस्ट्रेशन की भी देखें जो वाहन पोर्टल में मिलते हैं उसमें भी, जो इसका मतलब जो सियाम फिगर है वो होलसेल फिगर्स हैं और अगर आप वाहन के फिगर देखेंगे, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फिगर्स, उसमें भी जो ग्रोथ है वो दिखाती है कि एक
सेगमेंट, एक तबका है भारतीय अर्थनीति का जो स्पेंड काफी कर रहा है. अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फिगर देखेंगे उसमें इसका भी समर्थन मिलता है हमें. आप कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में जो ग्रोथ कम है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में ग्रोथ कम है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफी ग्रोथ ज्यादा है. और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपका कार सेक्टर के लिए है. और मैं समझता हूं ये इसलिए हो रहा है कि जो ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमी की जो बाउंस बैक आई है, वो जो हायर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी जो उनको वो जल्दी ज्यादा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आ गए हैं. इसीलिए ये कार सेल्स में जो आपने जो बायंसी देखी है उसी का ये परिचायक है. So auto sales are dependent also upon banking finance, and my question is related to banking. Nifty Bank actually went up marginally by 31 points, by only 0.09%. It's marginal, but there's also news that there'll be further mergers and consolidation in the PSU banks. We already seen 4 such mergers and consolidations which required acquisitions also. What does it mean for PSU banks in the future and the valuations right now? How should investors look at the PSU bank index? If you look at the overall banking sector, what you are seeing is that even though the credit growth is going up, deposit growth is not going up by the same margin, which essentially means that the net interest margin for the banking sector is some sort of under squeeze. So the banking bottom line once again faces a challenge that it used to face in the good old days, which is how to augment your income through fee-based income. In other words, not just through the interest margin, but through other income. So I think the banking sector in general is going to focus more on fee-based income sources rather than the interest income segments. Now that's about the overall banking sector. Coming to your specific question on the public sector banking space, the consolidation will and has always in the past has seen an improvement in the operating ratios, the efficiency parameters of the 10-12 odd public sector banks which got merged and consolidated into 3 broad banks led by Bank of Baroda, Punjab National Bank and Canara Bank. Now if more banks are consolidated and made into larger entities, I think there will be efficiency gains. So some of those banks which are already listed should see some uptick because of that. So the bottom line should improve. And remember that the overall NPL levels of the banking sector has come down to a level that is considered quite healthy for any banking sector. Is almost around 6% or so. So on the whole, the financial sector has relatively better news to offer to the stock market investor than many other sectors at this point in time. So right now you have these asset reconstruction companies which are bidding for these bad loans and sell it. Obviously they buy it at a lower cost and they sell it for a margin. You have Yes Bank, for instance, auctioning its bad loans, and there's already a successful bidder. That's one. Which is why the NPAs have come down. Exactly. And that also benefits, I believe, a prospective consumer looking to buy an asset which has been rejected or it has been defaulted upon. Absolutely. But the first part of your response was on, the net interest income, where the deposit rates have come down. Is that a sign macroeconomically that savings are not what they used to be? Is there a change in the consumer mindset and their spending habits? Well, I think what is happening is that the deposit rates are not rising at the pace that many people had expected that they would, which is a function of the bank's desire to protect their net interest margin. What this also means
is that a large number of elderly citizens, elderly savers, they will have to look for other platforms for securing a decent, stable return on their deposits. So there are now, of course, different platforms, different instruments which will emerge out of this, I would say, a trend change where bank deposits are not the only and secure and stable source of income from your capital. What we have seen in the Western markets, in the American market or the European thing, where the bank deposit income is not good enough to sustain the value of your capital. So I think we are at that stage. We are making that trend change, and investors and savers will have to keep in mind this potential change. जी, और अब नजर डाल लेते हैं घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन पर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज बिना किसी उतार चढ़ाव के 79 रुपए 88 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.23% गिरकर 108.30 पर चल रहा था। भट्टाचार्य जी, जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि जो रुपए में ये कमजोरी, ये रुपए की ही कमजोरी है या डॉलर की डॉलर में मजबूती ज्यादा आ रही है, इसलिए हमें रुपया कमजोर दिखाई पड़ रहा है, या इसके पीछे और भी कोई कारण आप देखते हैं? दोनों चीजें। एक तो डॉलर की मजबूती, सारी जो विश्व की सारी जो इमर्जिंग मार्केट जो हैं, उनकी जो सारी जो इन्वेस्टमेंट जो हैं, वो काफी इन्वेस्टमेंट्स वो अमेरिका में वापस जा रही है। अगर आप डॉलर की तुलना में यूरोपियन करेंसीज को देखें, यूरो को देखें या और भी एनी अदर करेंसी को देखें, उसमें आपको लगेगा कि डॉलर किस तरह से मजबूती से और भी मजबूत हो रही है। और दूसरी तरफ आप जो भारतीय मुद्रा की बात कर रहे हैं, करेंसी की बात कर रहे हैं, उसमें नरमी इसलिए आ रही है क्योंकि जो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, वो हालांकि एक्सपोर्ट्स अभी भी 23% की वृद्धि दर दिखाया है जून का एक्सपोर्ट, पर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि इंपोर्ट और भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो उससे जो डॉलर की जो डिमांड होती है वो बढ़ गई है, उससे भी हो रहा है। और तीसरी बात जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी जो है, वो एक कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी है। वो एक तरफ एक दिन में आकर आप बहुत सारी डॉलर मार्केट में डाल दें जिससे कि जो एक्सपेक्टेशंस को कम कर दें, वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है। हालांकि ये कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी है। इससे क्या होता है कि मार्केट को इसको स्टेबलाइज करने में मौका मिलता है, टाइम मिलता है। और हालांकि विदेशी मुद्रा भारतीय भंडार से कम हो रहा है। अभी तक इस साल में अगर आप देखें करीबन 19 से 20 बिलियन डॉलर, मतलब अप्रैल 1 से 30 जून तक की आंकड़े में 19-20 बिलियन डॉलर की कमी हो गई है। और ये ज्यादातर कमी इसलिए हुई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इंटरवीन कर रहा है। रुपए की जो डिप्रिसिएशन जो हो रही है उसको ग्रेडेड और कैलिब्रेटेड करे। घरेलू अर्थव्यवस्था पे रुपए की कमजोरी जो है उसका क्या असर आप देखते हैं, खास तौर पर जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत कुछ इंपोर्ट भी हम करते हैं, तो जो इंपोर्टेड गुड्स जो आएंगे तो वो महंगे होंगे, आयात जरूर, तो उसका इन्फ्लेशन पे असर भी आप देखते हैं? जरूर। हमारे देश में अगर आप इन्फ्लेशन का जो एक डेंजर जो आप देख रहे हैं वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से काफी है। क्योंकि आपने तेल की बात की, तेल की जो 85% जो हमारी तेल की जो खपत जो होती है वो इंपोर्टेड होती है। और काफी ऐसी चीजें हैं जैसे कोयले की बात कहें और गोल्ड में बात करें, सरकार ने काफी ऐसे कदम भी लिए हैं जिससे कि ऐसी आयात जो हैं उसमें थोड़ी बहुत रोक या अंकुश लग जाए। पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एक रियलिटी है, एक वास्तविक चीज है। और अगर रुपया डिप्रिशिएट करता है, जिस तरह से वो आयात को कॉस्टली बना देता है, उसी तरह वो निर्यात को भी और कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करता है। सो एक तरफ आप आयात में थोड़ी बहुत अंकुश देख सकेंगे, उसी तरह निर्यात में कुछ एक प्रोत्साहन भी मिलेगा।
अब रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई सूचकांक 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% चढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की बढ़त दर्ज हुई। दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंगसेंग 2.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में दिन के कारोबार में तेजी का रुख था। फ्रांस का कैक 0.3%, लंदन का FTSE 100 0.9% और जर्मनी का डेक्स 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। And before we put up a question to our expert, Shri A.K. Bhattacharya, on the Asian market performance, we'll take a short commercial break. So please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra, and we were discussing earlier about, in fact, we read the Asian market story. So, AKB, what is the state with China right now? You have estimates on the GDP for the quarter only, April to June, at only 1.2%, and then they're quoting actual figures which could be as low as 0.4% GDP growth, and then more questions being raised about the yuan valuation, that it is being undervalued by about 40%. So how does China react to that, and what does this mean for the Asian market vis-a-vis India? You know, we should be less worried about how China reacts to these numbers, but relatively we should be more worried about how the world will react to a large economy like China performing in this manner. And I don't think the global commentary or the global perception of what is happening in China, as you rightly pointed out, has been fully appreciated in its true magnitude. Because when China, with a large economy like China, actually grows by 1% or 2%, of course it is a sequential growth, but even then, if Chinese growth is, as many people estimate, will not be more than 4%. Now, India may still grow at a higher rate, but when the Chinese economy grows at 4%, the blow it will deal to global demand for goods and commodities, raw materials, components, everything, is something that we have not fully internalized. It will have an impact on the European economy, it will have an impact on the American economy, and frankly speaking, if you look at the American numbers right now, you actually start wondering why is America fearing recession? America is fearing recession not necessarily because what is happening in the US. Because they are worried about recession because what the Chinese deceleration in its economy will deal to the American economy, because the two economies are so interlinked, interdependent, that the impact of China will surely be seen in the US and of course in Europe, and to some extent India's trade partner China is not to be underestimated. India does export a lot of goods there. India imports a lot of goods from there. So we need to be cautious and conscious of this huge development that is taking place in our neighboring country. Let's have a look at what the US market is doing. It's already acquired mention in this program. US share markets closed modestly lower yesterday after investors digested disappointing quarterly results from two large US banks and hotter than expected inflation data. The Dow Jones Industrial Average Index lost 0.5%, the S&P 500 fell 0.3%, and the Nasdaq Composite Index ended almost flat. Both the US stock indices and the domestic stock indices appear to be moving in parallel in terms of when they fall and when they rise, and how one market follows the other, even though it did not happen in today's trade. My question is,
the inflation story. What is the retail inflation figures right now in the U.S. because that's making the headline news? Well, as you know, that the U.S. inflation is bad news, is over 9.1% right now. And U.S. has not seen this kind of inflation in the last 4 decades. Clearly, on the other hand, U.S. has seen the employment numbers still growing. So it is an economy which is overheated. Coming to your question about the Indian stock markets and the U.S. stock market, you will probably see the correlation when the U.S. market opens and you see how it performs during the day, because U.S. market has just opened and we have to watch and see whether they also follow the European and the Asian trend, so as the Indian trend. And also about the US dollar, you compared it to the rupee and how the RBI is intervening and what's happening really in the US right now macroeconomically. The US currency versus the other global currencies is also very strong. In fact, India is faring much better. The yen right now is almost touching 140 to the US dollar. The euro is also weakening against the dollar. Why is this the case? Why is these economies having weaker currency? Well, it's a relative strength of the economy compared to Japan and Europe. I think the Indian economy has shown greater resilience. There's no doubt about it. And India's management of the macroeconomic challenges has been definitely better than how, for example, in the Indian government and the Indian economy did not see the kind of splurge of government resources the way you saw in Europe and Japan even. So Indian government has been cautious, and I think we are reaping the dividends of that cautious approach. Moving on to the oil market, oil prices today rose after reports that an immediate Saudi oil output boost is not expected. Crude prices also rose with support from indications that the U.S. Central Bank could raise interest rates less aggressively than anticipated. Oil prices today rose around 2% in intraday trade. Brent crude was trading at $100.90 per barrel, while WTI crude prices were at $97.30 per barrel. Briefly, we're talking about fiscal prudence. How do you see our fiscal deficit and our trade numbers improve or not improve with oil prices still at $100? Do you expect it to come down further? Well, it's difficult to anticipate how the oil market will behave. There are a range of estimates of $65 a barrel to $450 a barrel. So you do not know which one to follow. And in the past also, many experts and analysts have just completely gone wrong in estimating the trend and trajectory of oil prices going forward. So I will not hazard that guess at all. But what I would see is that the government's fiscal deficit management has been rather prudent. The manner in which the government has imposed new taxes, you don't expect the fiscal deficit target of 6.4% of the current year to be slipped by a huge margin when the year ends in a few months from now. और अब बात सोने की कीमतों की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 120 रुपए सस्ता होकर 50,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 100 रुपए की तेजी से 55,140 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना गिरावट के साथ $1,703.70 प्रति औंस पर था। Thank you so much, AKB, for being with us on the program Market Mantra. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks logged gains of more than 0.5% amid positive global cues. Sensex rises above 53,750 points. Nifty settles above 16,000 mark. And Brent crude oil prices hover below $100 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar.